So this is the articulation we get with the solid axles. This is the rear lift. This is the front lift. Front right tire. And this is the mighty right rear tire. You got to see a lot of gap in here, like. Okay, so we can check the 235s. They're not creating much of a problem. So the gap here is pretty much, because the engine is in the front, there's lots of weight on the front tires also. So this is the articulation that I'm getting on this point. And over here, the solid axle is adjusting and pushing this wheel up and the other wheel down. So this is the story of the front axle. And regarding the rear axle, we can see this is like very articulated. There's a lot of gap between the body and the tire, and it's in complete contact. So we can't say that the tire is still lifting. And onto the other side, the wheel is not touching. Let me show you. I've still got a finger's gap, like this much of a gap. So the articulation is pretty well done, and I'm not facing any like issues with the 235, 75 or 15 road cruiser tires. And grip wise, they're going a pretty good stuff, like 235, 75 or 15. So the situation right now is कि हमारा ये जो टायर है ये फंस चुका है यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज ये मिट्टी को डिग कर रहा है. लेट्स ट्राई एंड सी कि हाउ डज इट परफॉर्म. इस पे ट्रैक्शन पूरी है, उस पे कम है. द रियर राइट टायर इज़ लो ऑन ट्रैक्शन. दिस हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन. इस पे स्ट्रेस काफ़ी है, एज वी कैन सी इन द सस्पेंशन ऑलरेडी. इस पे स्ट्रेस थोड़ा कम है. ये व्हील भी स्किड होना शुरू हो गया. एज वी कैन सी ये स्किड हो रहा है थोड़ा थोड़ा. ये टायर कम्प्लीटली आर्टिकुलेट हो चुका है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक इनसाइड द कार. सो दिस इज़ द सिचुएशन. आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए. जो सॉलिड एक्सल है, जो रियर लेफ्ट टायर है, ये कम्प्लीटली कार के अंदर जा चुका है. कार आपकी बिल्कुल सीधी है, एंड द रियर राइट टायर ये बिल्कुल आर्टिकुलेट होकर नीचे टच होने की पूरी कोशिश कर रहा है, सो दैट इट डजंट लूज द ट्रैक्शन विद द ग्राउंड. बट इस सिचुएशन में होता क्या है कि ट्रैक्शन इवेंचुअली उतना प्रेशर नहीं रहता जितना रियर लेफ्ट पे है. रियर राइट टायर पे प्रेशर कम है, सो वो स्किड होना शुरू होगा. सो व्हाट द ऑल ग्रिप प्रो सिस्टम डज इज़ कि वो इस रियर राइट टायर को लॉक करेगा, एंड इवेंचुअली द पावर विल बी ट्रांसफर टू द रियर लेफ्ट टायर, एंड वी कैन ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल. सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल ग्रिप प्रो सिस्टम. लेट्स चेक. इस टायर को ये ब्रेक लगा के स्टॉप करेगा, सो दैट द पावर इज ट्रांसफर टू द अदर टायर, and we can come out of this situation. Let's try. Easily, that can be easily done. No issues at all. कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है. First thing is the rear right tire and the front left tire, they have lost their traction and they don't have much of it. Either you come in momentum or you put the forward. Now let's try it. And I'm sure this will easily like win this situation. Let's go.
ओके, सो राइट नाउ आई एम गोना ट्राई दिस इन टू हाई। टू हाई में ट्राई करते हैं कि कार कितनी ईजिली चढ़ सकती है। मोमेंटम की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। ओके, मैं अभी फंस चुका हूँ, तो पीछे जाने की जगह नहीं है और आगे जाके देखते हैं टू हाई में कैसा परफॉर्म करती है। इस पे क्लच पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, आप स्टैंड स्टिल से गाड़ी को उठा रहे हो, टायर का साइज़ बड़ा है, तो लेट्स सी हाउ इट डज। नॉट बैड, नॉट बैड। अब ये नहीं चढ़ने वाले, काफ़ी आर्टिकुलेट हो गया है। मोमेंटम बना के ट्राई करते हैं। ओके, अब हम मोमेंटम बना के ट्राई करके देखते हैं टू हाई में कैसा परफॉर्म करती है। लेट्स सी। ओके, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। मैंने क्या फील किया कि इंजन पे स्ट्रेस काफ़ी पड़ रहा है, ट्रांसमिशन पे स्ट्रेस पड़ा इतनी इंक्लाइन पे अगर आप टू हाई पे चलाएंगे तो, एंड दिस स्ट्रेस इज़ ओनली गोना इंक्रीज, ये इंक्रीज़ होगा 4 हाई में। सो द बेस्ट वे टू डू इट इज़ कि आप 4 लो में इसे उस जगह से ले जाएं जहाँ पे आपकी कार नहीं चढ़ रही है, जहाँ पे जिमनी नहीं चढ़ रही है, एंड इट इज़ ओनली सेंसिबल बिकॉज आप ट्रांसमिशन पे बहुत कम स्ट्रेस डालते हो जब आप 4 लो में चल रहे होते हो। सो लेट्स ट्राई टू डू इट इन 4 हाई नाउ। ओके, सो अब मैं 4 हाई लगाने जा रहा हूँ, एंड फर्स्ट गियर लेट्स ट्राई व्हाट इट डज। मोमेंटम, प्लीज fasten your seat belt. अगेन लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इंजन बट इट डज मेक इट। 4 हाई में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्पेशली जो नए टायर्स हैं उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है सच। ओके, सो अब हम अपनी कार को 4 लो में डाल के फर्स्ट गियर में डाल के ट्राई करते हैं कि वो कैसे चढ़ रही है। फर्स्ट गियर 4 लो ईजिली 1000 RPM, 1000 RPM, 800 RPMs, नो इश्यूज ऑफ टायर स्क्रैपिंग, टायर स्क्रैप नहीं हो रहे हैं। मुझे सबसे खुशी की बात है, आपको फालतू लिफ्ट किट लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। व्हील्स का आर्टिकुलेशन बहुत सॉलिड है, एज यू कैन सी। द रियर लेफ्ट टायर इज़ कम्प्लीटली कॉन्टैक्टिंग। मैं हैंड ब्रेक लगा के ट्राई कर रहा हूँ, सो इट्स इन कॉन्टैक्ट। अब मैं क्या करूँगा कि कार को एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में फंसा के लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ द टफेस्ट पोजीशन दैट आई कैन फाइंड। ये सबसे टफ पोजीशन है। यहाँ पे कार काफ़ी ब्रेक छोड़ते ही पीछे जा रही है, एंड 4 लो फर्स्ट गियर। लेट्स ट्राई व्हाट इट डज। नो इश्यूज व्हाटसोएवर, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही किसी भी किस्म की। अगर मैं चाहूँ भी तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। टायर्स की ग्रिप बहुत अच्छी है, व्हील स्क्रैपिंग नहीं हो रही है, एंड हियर वी गो अगेन। बिल्कुल टैंक की तरह चढ़ती है ये गाड़ी आराम से, नो हरीज नो नथिंग। हाँ, अगर आप 4 हाई लगा रहे हैं या फिर आप 2 हाई लगा के चल रहे हैं तो आपको मोमेंटम चाहिए, उसमें आपकी कार को थोड़ा झटका भी लगेगा, आपको भी झटका लगेगा। बट वंस यू गेट टू नो द टेक्निक ऑफ 4 हाई, इट्स प्रीटी ईजी। बहुत आराम से आप हर चीज़ को
ओवरकम कर सकते हैं एनी इंक्लाइन। आई मस्ट से मैंने जितनी टफेस्ट सिचुएशंस पॉसिबल हो सकी उतना टफ ट्राई कर रहा हूँ। एंड लेट्स ट्राई इट अगेन। इंजन पे कोई स्ट्रेस नहीं है, क्लच पे कोई स्ट्रेस नहीं है, ईजिली सब कुछ हो रहा है, नो इश्यूज। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ जिमनी। एंड यू नो व्हाट, ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट व्हीकल, नॉट लाइक 1800 kgs or something, or 2200 kgs or 3 tons. This is just like 1.1 ton man. 1100 kgs या 1200 kgs इसका वेट है। और यही रीज़न है कि आप इतने इंक्लाइन में इसको स्टैंड स्टिल से उठा सकते हैं। लाइक यू कैन स्टार्ट टू क्रॉल योर कार इन द स्टैंड स्टिल। फर्स्ट गियर, 4 लो, लेट्स गो अगैन। टायर्स की ग्रिप बहुत अच्छी है। अगर हाईवे टेरेन टायर्स जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो यहाँ पे स्लिप करने शुरू करेंगे, बिकॉज ये घास काफ़ी स्लिपरी होती है। टायर्स की ग्रिप बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है किसी भी प्रकार की, किसी भी किस्म की। लेट्स सी। Oh, power brake and the engine is off. That's a risky combination. Okay, so I'll try and do a little more complicated stuff. ओके, सो अब क्या है कि बीच में एक खड्डा आने वाला है। आई होप आई डोंट बैंग एनीथिंग। ये और टफ हो गया, ईजिली डन। थोड़ा सा व्हील स्पिन हुआ, बट द ऑल ग्रिप प्रो सिस्टम इट किक्स इन एंड इट प्रिवेंट्स द व्हील फ्रॉम स्लिपिंग। ये उस टायर को कैप्चर कर लेगा, उस टायर को ब्रेक लगा देगा जो टायर हवा में होगा, और जो टायर आपके कॉन्टैक्ट में ज़मीन के साथ, उसको वो ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ एनी ट्रिकी पोजीशन, जैसे कि अभी जिस पोजीशन में था। लेट्स ट्राई अगेन। ओके, फर्स्ट गियर 4 लो, एंड ट्राई करो कि आप किसी ऑब्स्टेकल को ज़ोर से हिट ना करो। व्हेन यू हैव गॉट दिस मैकेनिज्म यू कैन ईजिली डू इट, आराम से, बहुत आराम से। तो कुछ लोग होते हैं बहुत तेज़ी से लेके आते हैं, कार जंप करती है, एंड दैट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन, एंड यू गोना हर्ट योर सस्पेंशन समहाउ, ट्रस्ट मी, नो मैटर व्हाट इट इज़। लेट्स ट्राई वन मोर एंगल। ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी काफ़ी अच्छी है। द कार इज़ नॉट टचिंग एनीवेयर। वो आगे रोड है, सो दिस टायर्स आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अच्छी जॉब कर रही है, दैट्स गुड।